Fine. So we are beginning with a new lesson today called classification of animals. Okay. In ninth standard, you had classification of plants. Yeah, I had given you many good examples, right? Acha, before I begin, what about that online test which I had sent? I got response from only two of you. What about others? जो मैंने गूगल टेस्ट भेजा था एक, only Anandita and Pranav has solved. This one Diksha has also solved it, no? दीक्षा का भी काफी कम आया स्कोर. दैट वाज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस कि अभी तक जितने लेसन्स हुए सब में से मिला कर. एंड आई टोल्ड दिस अर्लियर आल्सो कि यू टेक इट एज अ प्रैक्टिस कि हाउ मच यू रिकलेक्ट, हाउ मच यू रिमेंबर. इट वाज ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई यू आर नॉट अटेम्प्टेड इट? स्नेहा, हैव यू अटेम्प्ट डन? किया है. हाँ, तो स्कोर क्यों नहीं Yes. पोस्ट किया? पोस्ट. ओके. हाँ, मैंने पोस्ट डाला था करो ना तो ग्रुप में बोलो अभी. कि वंस यू अटेम्प्ट देन यू हैव टू पोस्ट योर स्कोर ओवर देयर. ओके, सो पुट दैट एज अ मैसेज आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, कैसा रहा अटेम्प्ट? वाज गुड. अच्छा था. अच्छा था. प्रणव, व्हाट अबाउट थोड़ा. यू? वाज इट गुड? Got a good revision? ठीक था सर. ठीक था. Okay. Yes, हाँ, Aditya, got रिवीजन your तो हो message. गया लेकिन ठीक था. अच्छा. And दीक्षा का इतना कम क्यों हुआ? At least like 50%, 60% तक तो रहना चाहिए ना? It was not that difficult, I suppose. I had asked very typical common questions. सर मैंने मार्क्स नहीं सेंड किया था. So somebody sent me 17 out of 40. गार्गी ने सेंड किया था वो. Gargi, was it you? 17? तो बोल ना, तब से सुन रही है इधर. अच्छा. Then Diksha, what about you? Have you sent it? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया सर, बट मार्क्स सबने नहीं सेंड किया मुझे था. भेजा. नहीं, everybody have to put their scores in the group which is there. मुझे भी पता चलना चाहिए ना. Okay, and from that group then Sneha you pick it up and make a note of it. Okay. Okay, ठीक है. Yes. चलो, so attempt that because this kind of test whenever possible I'm preparing. It's a good practice. Those who have done it you know that practice हो रहा है ना, revision हो रहा है, recollect हो रहा है सारी चीजें. That is very good. So that's why make sure you are attempting it. Okay, it will help you in your exams. Okay, so let's begin with the new topic, that is classification of animals. Okay, now animal classification, when you say just like in ninth standard you had classification of plants. Okay, so same way in 10th standard you have animal classification. Okay, so coming to the word classification, any group of organisms on the earth, okay, we have a habit of classifying it. Why do we classify animals? क्यों classify करना है? Yes, why should we classify organisms? You all know the meaning of the word classification. Okay, whatever organisms are there, you have to group them into small or big groups, and the groupism that we do is based on the similarities and the differences between the different groups of organisms. Okay, so similar organisms को हम एक ग्रुप में रखते हैं, different organisms को अलग अलग ग्रुप में करते हैं. ठीक है. So Mrunal, tell me, animals के kingdom में, yes, animals के kingdom में why it becomes necessary to classify these animals? क्यों classify करना चाहिए? Give your opinion. like अभी तो शुरू कर रही है. क्लासिफाई करेंगे तो क्या फायदा होगा ये बताओ. यस मृणाल. Yes, tell something. This vast world of animals, if you classify them, how it will help us?
बोलो. Any one opinion of yours, how it is going to help us? No idea? Anyone? We can The always ancestor. assume that any animals which have similarities may have similar ancestors. Okay. Like you Like can point out towards the ancestry of certain animals. Any other answer? आनंदिता क्या बोलना है इस बारे में? To study their habits. To study their habits. Okay. Diksha, any other opinion? स्टडी करने के लिए इजी पड़ेगा. Okay, that is the most important point actually. The evolution, habits and all, that is correct. But सबसे important है कि we are talking about a group which is too vast and too big. We are talking about the group of animals. अभी बचपन से देख रहे हैं कि whenever you say the word animal, okay, like as a small kid, you know कि whatever animals you used to see around, okay, small children they get excited. कुछ अलग दिखते थे. रास्ते में कुत्ते रहेंगे तो उसका पूंछ खींचेगा. तेरे घर में चूहे आ जाएंगे तो उसके साथ मस्ती करेंगे. Like children tend to get fascinated by looking at these different creatures. Like more than plants, obviously children get more associated with animals. Okay, plants का structure totally different है. उसको हम अपने आप से correlate ज़्यादा नहीं कर सकते. They are also obviously important because उनके बिना animals नहीं survive करेंगे. And when you are talking about animals, we find more similarities with us because we are also animals. Correct? Now you have studied evolution, so you know very well कि our ancestors were the apes. हम लोग का ancestors जो है वो monkeys and apes है, तो they were also animals. उनमें से हम लोग descend हुए हैं, so we are also animals. That is why when you study about all the different groups of animals, you are able to correlate more. Okay, that is one thing. But the world of animals is so vast and so huge that it is practically not possible to understand about each and every animal separately and remember them. इतना ज़्यादा इसका diversity है. Approximately कुछ estimated है कि in the entire earth, whatever different groups of organisms are there, right from small microorganisms to big ones, okay, the maximum percentage of organisms belong to animals. सबसे ज़्यादा जो diversity है वो animals का है. So in this huge diverse animal world, if you want to study about them, it should be made convenient first. And for that classification becomes necessary. Okay, so it is not just about assigning them into groups. So उन groups के criteria को भी decide करना हमारा काम है. Correct? So that is very important thing. So you can see this. See the vast world of animals. There are birds, there are worms, there are insects. Okay, there are different types of snakes. Okay, fishes है, butterflies है, insects है, frogs है, aquatic animals are there. Like you pick up any one group and that itself is a very vast group. Okay, सिर्फ अगर हम लोग से suppose किसी को fishes पसंद है, like to study है, not for eating. Okay, तो अगर suppose fishes किसी को पसंद है, तो the entire world of fish is also a very used one. कितने तरह तरह के fishes है. The shape, size, color, features, adaptation, the habits, सब different. Insects world में देखो, insects तो सबसे ज़्यादा diverse है. There is no end to it. The maximum diversity of animals you find in the insects. More than 2 lakh, not even 2. I think around 4 to 5 lakh जो species है वो सिर्फ insects के. इतने सारे कीड़े इस दुनिया में. Okay, but that's a huge world. उनका अपना ही एक importance है. Birds का world देखो. Again, so colorful, so pleasant, and so musical also sometimes. सब nature ने बनाया. Correct? So there are, like at the basic level, you first study about entire animals as a group. But then if you are interested in animals, then people specialize in few of these groups and उनके बारे में एकदम specialist बन जाते हैं. जैसे suppose you are fascinated with birds.
उसके बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है. ओके, तो यू कैन बिकम अ पर्सन जिनको बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट, वेर यू विल स्टडी ओनली अबाउट बर्ड्स, एवरीथिंग अबाउट बर्ड्स. ओके, तो जैसे इंडिया में एक वेरी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पे एक बर्ड सेंचुरी बना हुआ है गोवा में. ओके, तो ही इज अ वेरी पॉपुलर ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट डू अ लॉट ऑफ वर्क. एंड देन इफ यू आर, अभी जैसे एनिमल्स बोलते हैं तो वी एसोसिएट दैट विद वाइल्ड लाइफ. तो सपोज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस पार्ट ऑफ इट, बट उसका बिहेवियर, उसका जो एस्थेटिक्स है, आर्टिस्टिक सेंस में अगर हम व्यू करते हैं, तो देन ऑल्सो यू कैन बिकम अ वेरी गुड प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो वाइल्ड लाइफ के मैगजीन्स आते हैं, रिपोर्ट्स आर्टिकल्स आते हैं, इवन न्यूज़पेपर्स में. ओके, तो सपोज यू आर गुड एट फोटोग्राफी. ओके, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का फॉर्मल कोर्स होता है. यू कैन डू दैट कोर्स. ओके, एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. कितने बढ़िया. अभी ये सब जो फोटोज दिख रहे हैं, somebody हैज कैप्चर्ड दिस ना. जैसे ये नीचे फ्रॉक को देखो, उसको थोड़ी ना बोला है कि स्माइल प्लीज लुक एट द कैमरा, है ना, बट कितना बढ़िया फोटो है. Right, and taking photographs of animals is a very challenging task because you have to run after the animals, especially the birds. Compared to plants, animals के बारे में स्टडी करना ज्यादा चैलेंजिंग है because plants are there at their place. You don't have to run after them. तो हम लोग सपोज किसी जंगल में कोई प्लांट को देखा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बार बार उसी जंगल में जाके उसी जगह पे हम प्लांट को देख के स्टडी कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट से बर्ड्स, तो ढूंढते रहो हवा में, उसके पीछे दौड़ो, एंड देन यू कैप्चर दीज इमेजेस. तो उनका पूरा बिहेवियर को स्टडी करना. तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इथोलॉजी करके बोलते हैं. ओके, सो once you study about this and career point of view, there are too many things that you can do. And बहुत मजेदार काम लोग करते हैं. Okay, so that is why this study is very very important. And obviously some very logical thing that always comes into point is कि as human beings and as the most advanced creatures on this earth, it becomes our moral responsibility, okay, that we should study about these animals. And only when you study, you understand, you learn to value them, because of which you realize that you should be conserving them. Because अभी देख रहे हैं ना कितने सारे एनिमल्स सब कितना एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं. राइट, कैन यू आइडेंटिफाई दिस एनिमल? असली है वो एनिमल. कैन यू टेल विच एनिमल इज दिस? Panda. It is the giant panda. Panda. Yes, the giant panda. Naturally कहाँ मिलेगा वर्ल्ड में? Which area? Where do you find the giant panda? Japan. China and Japan. Yes, Japan. yes. Okay, बैम्बू के शूट्स बहुत खाते रहते हैं. बट सी हाउ इट लुक्स. नेचर ने क्या सोच के उसको इतना कलरफुल ऐसा टेडी बियर की तरह बना दिया. करेक्ट. So don't you think at least for the sake of its looks and beauty, we should be conserving them? एक बार ये एक्सटिंक्ट हो गया तो ऐसा हम बना सकते हैं क्या? हम स्टफ टॉयज बना सकते हैं, बट जाइंट पांडा नहीं बना सकते. करेक्ट. So we get to learn many things from animals. There is a term called as biomimicry. कि एनिमल्स के फीचर्स और उनके स्ट्रक्चर्स को देखकर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं. जैसे हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर इज एन इंजीनियरिंग क्रिएशन, बट उसका इंस्पिरेशन किससे मिला? इट इज फ्रॉम वन ऑफ द एनिमल्स. हेलीकॉप्टर देखा होगा सबने, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका टेल, उसका जो पंख है ऊपर ऐसा, ये स्ट्रक्चर एकदम एक एनिमल से. Dragonfly. इट इज द ड्रैगन फ्लाई. Dragonfly. ओके, इट इज द ड्रैगन फ्लाई. तो मतलब सोचो एनिमल्स को देखकर हम कितना इंस्पायर होते हैं. बर्ड्स को देखे सीखे, उनके एरोडायनामिक्स को सीखने के बाद ही तो हमने एरोप्लेन बनाया. पानी में मछलियों को देखकर हमने शिप बनाए. So we cannot do anything without this natural world. We cannot be above nature. वो समझने के लिए एनिमल्स के बारे में स्टडी करके उनको वैल्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Got it? Okay, so the diversity is extremely vast. ठीक है, ये देखो.
So while talking about the classification of animals, there are different methods of classification. And ये एकदम से one fine day suddenly पूरा classification system आया नहीं है ना? It has taken time. People have taken time to understand the animal world first, and then उसको धीरे धीरे classify कर रहे हैं. And एक के बाद एक like many species were just discovered. पहले जानते ही नहीं था ऐसा कोई species है करके. बाद में धीरे धीरे डिस्कवर होने लगे. तो डिस्कवर होने के बाद ऐसा नंबर बढ़ता चला गया, तो इट रिक्वायर्स अ नीड फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन. So the first type of classification was called artificial method. It was very ancient method of classification because that time there was no other technology to study scientifically. So that classification was based on the morphological features. Okay, कि जो भी characters visible रहते थे animals में, like the body size, okay, the shape of the animals or the habits, symmetry, उनका behavior जो नजर आता था, तो वो देखकर क्लासिफिकेशन करते थे. So that was called as the artificial method of classification. Okay, so big animals, small animals, burrowing animals, flying animals, ऐसे करके उन लोग क्लासिफाई करते थे उस टाइम पे. Okay, so this type of classification was given by many people and it was started by Aristotle. ये बहुत पहले का बात है, when technology was not available. Okay, बाकी सारे फीचर्स को इसलिए सभी नहीं स्टडी करते थे. So Aristotle was the one who started this type of classification. Then it was followed by people like Theophrastus. Okay, you have Aristotle, Theophrastus, फिर उसके बाद है प्लाइनी. अभी एक्चुअली इनको पूरा नाम है प्लाइनी द एल्डर, ऐसे बोलते हैं. Okay, the person is called as Pliny the Elder because there is someone called Pliny the Junior also. हिस्ट्री में उस टाइम पे ऐसे मानते थे लोगों को. ठीक है, so Pliny, then there was this person called John Ray. तो इन सबके नाम याद रखना है. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है बेस्ड ऑन ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एनिमल्स. Okay, and that was put forward by these people, started by Aristotle, others also joined them, and it was based on the morphological visible features. इसलिए उनको आर्टिफिशियल मेथड करके बोलते हैं. दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल द कैरेक्टर्स. इसलिए ये सिस्टम हम पूरी तरह से सभी इसको यूज नहीं करते. some points are valid, some of them are questionable, which we don't have an answer. Okay, then the next one, तो जब advancement हो गया, okay, so when advancement took place in the technology and scientifically we were able to study about a lot of other biological features. Okay, like section वगैरह लेकर अंदर study करने लगे, so we came to know the histological structure of the tissues and all. किस तरह के cells हैं, we know that, जैसे epithelium cells है, muscular tissue है, nervous tissue है, all these things were not observed earlier. Okay, chromosomes के बारे में study हुआ, genetics तक पहुंच गया, DNA का structure सब पता चला. So because of that the study got a totally new angle. जैसे हमें पता है कि genetically speaking, okay, human beings and chimpanzees are just 2% different from each other. ये हम लोग सिर्फ बाहर से फीचर्स देख के नहीं बोल सकते. बाहर से हम देख के ये बोल सकते हैं कि yes they are quite similar, but genetically we know that chimpanzees are our closest ancestors. Then similarly biochemical property, जैसे proteins के structure, nucleic acids का structure, chromosome का arrangement, okay, what type of other metabolism takes place inside the cells, all this. अभी जैसे DNA का structure हमने पढ़ा है, so we all know very well कि DNA double stranded molecule है and it has got a sugar phosphate backbone and it has got nitrogenous bases on it. So entire DNA strand has got a fixed sequence, और वो sequence जो है वो सिर्फ 4 लेटर के बने, ATCG. But ATCG is universal across the entire animal kingdom, entire organism, biological sector. है कि नहीं? तो ये जब पता चलता है तो इससे क्या प्रूव होता है कि there is some commonality between them. तो इन सब प्रॉपर्टीज, इन सब फीचर्स को भी जब हम कंसीडर करते हैं along with the morphological aspects, तो उसको बोलते हैं natural method of animal classification. So this gives more accurate classification system. Okay,
So natural method of classification was at a slightly later stage when technology developed, and this was put forward by Dobzhansky. ये इनका नाम है. The name of the person is Dobzhansky. Okay, and the other one, a person called Mayer. Dobzhansky and Mayer. Okay, and it was also followed by Carl Woese recently. So in तीनों के नाम आते हैं when you talk about the natural method of animal classification. Understood this everyone? Okay, अच्छी तरह समझ रहे हैं दोनों सिस्टम के बीच का डिफरेंस, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल? Yeah, okay. Be on video everyone. दीक्षा, प्राची, आदित्य बाहर आ गया क्या घर पे? Yes, Aditya, are you back? सर इधर ही बैठा हूँ मैं. तो बाहर गया था ना, मैसेज किया था? नहीं सर, मैं अभी बाहर नहीं गया था, मतलब उस दिन टेस्ट के टाइम पे बाहर गया था. अच्छा, वेरी गुड. तो टेस्ट कब करेगा फिर? अभी देखता हूँ, अभी करूंगा. चालू है क्या सर वो लिंक? यस चालू है, मैंने रखा है बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू अटेम्प्ट. बट ऐसा डिले मत करो, हाँ जब सर, दिया तो है मैं तभी कर करता दो हूँ. टाइम निकाल के. हाँ ठीक है? ओके, अभी करता हूँ सर ये होने के यस, बाद. बाय टुनाइट आई वांट द रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी हु इज पेंडिंग. ठीक है? Yes, sir. प्राची, हैव यू अटेम्प्टेड इट? प्राची, जो ऑनलाइन टेस्ट भेजा था वो किया? हाँ यस सर. स्कोर कभी भेजेगी? आई पुट अप अ मैसेज इन द ग्रुप ना कि स्कोर डालो अपना अटेम्प्ट करने के बाद. व्हाट वाज द स्कोर? यस प्राची. Okay, network issue. ठीक है. So understood the two methods of classification animals का. Okay, you have to remember the names of the people associated with it also. ठीक है? And the criteria behind them. Okay. Now when you are talking about animal classification, just as we started that in the beginning, ये animal classification करने के क्या benefits हैं? Okay, what are the things that you learn out of it? It's not just about classification. Right, you group them into different groups and based on that you are able to learn a lot of things. Right, तो क्या क्या सीखने को मिलेगा? जैसे first thing, okay, the first benefit is, जैसे दीक्षा ने बोला कि it becomes convenient to study this huge diversity of animals. Correct, when you classify them, when you group them, you know it is possible to observe the fact that there are many animals which are similar to each other while many others are different from each other. Okay, so the convenience is more important. Correct. Then secondly, yes, representative animals. इसका मतलब क्या है कि some animals, okay, if you study about their features, so you study about one animal and you come to know the features of all the other animals belonging to that So your group. voice is not. Okay, यहाँ पर भी थोड़ा सा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन है. Am I audible now? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Okay. It's clear for me, sir. हाँ मेरे साइड से भी क्लियर है. Okay. सर क्लियर है. Sorry, might be some network issue, fluctuation रहेगा बीच में. Yeah, so I was telling that there are something called representative animals. Okay, it means that you study about one or few animals and you come to know the features of the entire group. Okay, for example, ये देखो, these animals are all different but they have lot of similarities between them. इसको अगर मैं बोलूंगा कि these in this picture what you are seeing, they all belong to the dash family, तो क्या बोलोगे? Cat family. Yes, we'll simply call it as a cat family. Correct. But जैसे हम लोग cat बोलते तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आते हैं. We know only one animal as a cat. But cats के कितने सारे types हैं? Wild में कितने सारे types हैं? Even tigers, leopards and all belong to the cat family. तो इसका मतलब क्या हो गया कि you study about one animal out of it.
तो पूरे सारे ग्रुप के एनिमल्स के फीचर्स हमें मैक्सिमम पता चल जाते हैं. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू क्लासिफाई. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, सो दैट इज व्हाई स्टडीइंग अबाउट सच रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट. अभी जैसे सबसे एक और कॉमन बोलते हैं मंकी. So if you say monkey, then only one type of animal comes to your mind. Okay, तो जैसे some few weeks back वहाँ स्नेहा के इधर वहाँ पे एक एनिमल आ गया था and she has sent me the photo. हाँ याद है ना? तो you have sent me the photo saying that आज हमारे घर पे एक monkey आ गया करके. Then I saw the photo and I realized it is not a monkey. उसका नाम था लंगूर. हनुमान. हनुमान लंगूर. हाँ Okay, so मतलब what Sneha did was not wrong. Because वो apparently monkey जैसे ही दिख रहा था and anybody will call it as a monkey. But only a person who has learnt it deeply will understand कि वो एकदम monkey नहीं है, it is a different animal. So animals like monkeys, langurs, okay, gibbons, ऐसे जितने भी animals है जो एक जैसे दिखते हैं उनको monkey के group में रख देते हैं. Even langurs are of different types. Monkeys are of so many types. Okay, you can differentiate between a squirrel monkey and a spider monkey. दोनों अलग है. हनुमान लंगूर एंड अ गोल्डन लंगूर, दे आर डिफरेंट. तो नेचर में इस तरह से बहुत डाइवर्सिटी है. दैट इज व्हाई रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट फीचर है आइडेंटिफिकेशन. कि सपोज यू आर इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक फ्रेटर्निटी बट एज अ लेमैन आल्सो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है. द सेम एग्जांपल्स नेहा, करेक्ट, कि व्हेन यू स्टडी अबाउट इट नाउ यू नो that yes, which animal is that. Okay, अभी जैसे 2 years back I was a part of that 2 months का course work. Okay, field study था, तो we were in the forest, tent लगा के वहीं रहे थे हम लोग. तो at the night time outside our tent we were deep in some forest. Okay, and outside our tent there was a sharp cry. बॉम्बे के आसपास ही तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे हम लोग. तो देयर वाज अ वेरी शार्प क्राई. सडन एक तो रात का दिसंबर का महीना था, ठंडा था, पिच डार्क था एंड एकदम जंगल में पूरा शांत, सुनसान एकदम. एंड इन द मिडिल ऑफ द नाइट सडनली वी हर्ड अ शार्प क्राई. ऐसा लगा कोई बिल्ली है. तो द साइंटिस्ट व्हिच वर देयर विद अस, ओके, उन लोग ने क्या किया, दे वेंट आउट ऑफ द टेंट विद अ टॉर्च एंड दे रन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. इतना हिम्मत था उनमें कितनी रात को एकदम जंगल की तरफ भागे. इवन आई फेल्ट लाइक बट आई स्टेड बैक. तो वहां पर जब देखा हमने तो इट वाज लाइक कैट के जैसा आवाज था, बट इट वाज नॉट अ कैट, इट वाज एन एनिमल कॉल्ड द पाम सिवेट. वाइल्ड जंगली बिल्ली जैसा समझ जाओ, बिग वन. इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई सॉ दैट एनिमल जंपिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री ब्रांच. एंड ऐसा हो गया था कि देयर वाज सम लेपर्ड नियर बाय and the leopard had tried to catch that palm civet, but वो बच निकला. तो उस चक्कर में उसने जोर से आवाज किया था. Okay, so only a person who is able to understand these features, immediately that person can tell कि वो palm civet है. And many times it happens कि birds के केस में you hear the bird songs and then you try to identify the bird. ऐसे भी करते हैं लोग कि मतलब you don't see the animal, but based on the what you hear about them, you are able to identify. Because based on the songs and these features also we do some kind of classification within the groups. That is also possible. Okay, then ये देखो जैसे प्रणव ने कहा highlights the evolutionary history, है ना. जैसे ये animals में देखो, these are the dinosaurs जो आज नहीं है. But when these animals evolved, okay, due to some reason they got extinct, but इनमें से evolution होकर एक transition stage बना. There was an animal called Archaeopteryx. That was the transition or the connecting link, what you have studied, between reptiles and birds. So reptiles में से evolution होकर birds बने. So this kind of evolutionary aspect also you understand when you classify animals. तो उसको हम लोग बोलते हैं phylogeny. Okay, evolutionary history का मतलब है phylogeny. ठीक है, that is also an important point. And then understanding the adaptations. Animals में adaptation बहुत जरूरी है.
Any organism in the nature. Why do animals have to adapt themselves? क्यों adapt करना पड़ता है उनको? To survive. Yes, because अपने environment को तो बदल नहीं सकते वो, so environment के साथ adjust करना जरूरी है. That gives rise to adaptations. Okay, so if you are talking about adaptations, this is one of the best examples. इस animals को हम क्या बोलते हैं? This is a camel, right? इसको हम क्या बोलते हैं? Dash of the desert. A camel is called as a dash of the desert. Transportation. नहीं. Ship. It is the ship of the हाँ, desert. ships. Very good. Camel को बोलते हैं ship of the desert. Okay, because desert में ये animals बहुत अच्छे से adapted है. उसके hump में खाना store करते हैं, पानी store करते हैं. उसका पैर का जो hoof है वो sand में चल सकते हैं. It has got a nictitating membrane के transparent eyelids जैसा कि आंख बंद करके भी चल सकते हैं. Sandstorm वगैरह आएगा तो affect नहीं करेगा. All these points are there which the animal has developed, and it can live without water for a long period of time. Desert में बड़ा requirement हो जाते हैं. Correct? So that is why they are examples of adaptations. ऐसे हजारों examples हैं animal kingdom. Okay, we'll see them as it comes. And next point हो जाएगा understanding the habitats of animals. What do you mean by the word habitat? Habitat का मतलब क्या है? Habits. Where they live. behaviors. Yes, the place in the natural environment Where where they an animal live. lives. इसको बोलते हैं habitat. Okay, so for example, burrowing animals. तो ये खरगोश. Okay, it lives, yeah, even many rodents. Okay, जो rat family को belong करते हैं, they all live in burrows. तो जमीन में गड्ढा खोदने का आदत है उनको. And उसके लिए उनके पास adaptations है. They have sharp incisors. They have very, मतलब उनका ऐसा है कि अभी चूहे को देखा रहेगा वो एक जगह ज्यादा रुकेगा नहीं. If any organism is coming near that rat or something, immediately it will just run. And उसको पता है गड्ढा किधर है, तुरंत अंदर चला जाएगा. टॉम एंड जेरी में देखा रहेगा. Correct? So they are all understanding the habitats and their role in the nature. That is also very important. Okay, and then lastly, understanding the relationships of animals with each other in the nature. ये सब अलग अलग species को belong करते हैं, but they themselves have some relations between them. They associate with each other, either in a friendly way or in an enemy way. But nature में उनके आपस में association रहते हैं. जैसे in a forest, okay, suppose if there is a tiger moving around, तो टाइगर अगर फॉरेस्ट में घूम रहा है तो आसपास जितने पेड़ में बंदर होते हैं, their behavior changes. It happens. Okay, their behavior will change. They will start shouting at the top of the voice, but there is a reason behind that. क्यों ऐसा करते हैं वो? Because they want to alert others of their community कि there is a tiger here. Be careful. Okay, so animals के आपस में relationship होता है. They know how to communicate with each other, to help each other, okay, to protect each other, okay, to depend upon each other कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो. जैसे this example over here in the picture. Okay, यहाँ पे क्या है? ऐसे बहुत कॉमन नज़ारे देखे रहेंगे. ग्रास खाने के लिए गाय भैंस वगैरह जब जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, तो द बर्ड्स कम एंड सिट ऑन देम. हैव यू नोटिस्ड? बहुत बार ऐसा होता है कि बर्ड्स वगैरह उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. कैन यू टेल? To eat the insects which move when the buffalo walks in the grass. Yes, buffalo, cow या जो भी cattle है, when they are feeding on the grass, okay, so they are plucking out the grass leaves. तो वहाँ थोड़ा जगह क्रिएट हो जाते हैं, एंड वहाँ पे जितने इंसेक्ट्स वगैरह होंगे ना, दे गेट एक्सपोज्ड. तो बर्ड्स इमीडिएटली उनको पकड़ के खा लेंगे. तो बर्ड्स ये इतने सालों में ये समझ गए कि wherever this cattle is grazing, there will be insects. तो बर्ड्स का थोड़ा मेहनत कम हो गया ना इंसेक्ट्स को ढूंढने में. एंड एट द सेम टाइम बफेलो काउ के जो शरीर पे भी कितने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स उनको भी पकड़ के खा लेते हैं.
तो इसमें किसको फायदा हुआ? गाय भैंस को फायदा हो रहा है कुछ? दोनों को दोनों को दोनों को the profit or the gaining is only for the birds. अगर उनके शरीर में से थोड़ा निकाल रहे, क्लीन कर रहे तो देन वो कैटल को फायदा है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं करते। ओके, इसमें एक्चुअली फायदा सिर्फ बर्ड्स का है, बिकॉज गाय भैंस को उतना ही मेहनत करना पड़ता है ग्रास खाने के लिए। तो दिस इज अ प्लस एंड अ न्यूट्रल रिलेशनशिप कि वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। गाय भैंस को फर्क नहीं पड़ता है, बैठना बैठ जाओ। ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कमेंसलिज्म। दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। ओके, देयर इज वन मोर बर्ड, उसका नाम है हनी बैडजर। अच्छा, बाय द वे कॉल कट हो जाएगा, विल जॉइन बैक अगेन, ठीक है। इट इज कॉल्ड हनी बैडजर। वो हमेशा फॉरेस्ट में बेयर को फॉलो करेगा, भालू। बिकॉज भालू वेरेवर जाएगा, जहां पे भी वो जाएगा ना, वहां पे बी हाइव रहेगा। So it will tear open the beehive and feed on the honey and leaf. Honey badger will feed on the remaining larva and the eggs of insects. तो वो सिर्फ हनी बैडजर उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि पता है बीहाइव कहाँ जा है करके वो ढूंढ के निकाल के देगा। So that is a relationship. These animals have developed all this in the nature. Okay, so let's join back and continue again. ठीक है, ज्वाइन करो।